in the previous video we talked about the header, and मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, that was the mobile view. As you can see, the mobile view is looking not so good for the header point of view से, right? We can also change some things if we want, like menu को हम change कर सकते हैं, because as you know कि मोबाइल के अंदर हमारा मेन्यू हैमबर्गर मेन्यू में चला जाएगा. This is known as hamburger menu. ठीक है. Then we have the logo. We can increase the width of the logo as per the mobile thing, right? और हम चाहें तो इसको भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. We can put it in beach or we can put it inside. My preferable position is left, so I am keeping it on left. Then the all cool. I am liking this stuff. And if I talk about this, it's also looking nice. Let's create another section. Add section पे क्लिक करते हैं, अबाउट पे क्लिक करते हैं. यहाँ पर हाँ बस प्री बिल्ड बना हुआ एक ब्लॉक मिल रहा है. हम उसी ब्लॉक को इसमें इंसर्ट करते हैं. यहाँ पर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं. वी कैन ऐड आर फोटो इफ़ यू विश टू. एंड अगर हमारे पास कोई फ़ोटो अवेलेबल नहीं है, वी कैन यूज़ द इमेज ऑफ समवन एल्स डिपेंडिंग अपॉन what kind of thing we are creating. We can write something like quality over quantity, or we can write quality over quantity. Okay, then we can write something related to ourselves. What is exactly your story? I always believe in. My name is Varora. I always believe. Over quantity. And you can write anything you want, whatever about yourself. Just feel free to write something about yourself, some in a good way. And currently मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए randomly कुछ भी लिख रहा हूँ, so माफ़ कीजिएगा please. Okay, so next we have, ये एक आपका another section ready हो चुका है इसी पेज के ऊपर. ठीक है. Then again we will click on add section. If you want to add the gallery, we can add the gallery, right? Whatsoever gallery you like, you can keep. एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी ये वाली गैलरी डाल दी है. अगर हम चाहें तो हम इस गैलरी की इमेज को मैनेज कर सकते हैं. लाइक एज यू कैन सी, दिस इज समथिंग सॉर्ट ऑफ 1 2 3 4 images. We can add more images with the same procedure as I told you before. ठीक है. And we can control the visibility, like whether we want to hide it on mobile or not. And similarly we can hide it on desktop as well. Now I can hide it, and hide के हिसाब से ऐसा कुछ दिख रहा है. एंड ये मुझे मतलब डेस्कटॉप व्यू में नहीं दिखेगा. अभी फिलहाल मैं बैकएंड में लॉग इन हूँ तो मुझे वो चीज़ दिख रही है. बट जब कोई पब्लिक विजिटर या पब्लिक यूज़र हमारी वेबसाइट पे आके एक्सप्लोर करेगा तो उसको ये सेक्शन नहीं दिखेगा. ठीक है. देन दिस इज समथिंग रेडी. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ द टेक्स्ट. ओके. मूड ऑफ Varora. Since the website is mine, so I prefer keep the names according to my thoughts and my things. Okay, I can add the images over here very easily. Whatever image I want to add, as I told you. So this is the gallery section is ready. Next section we can add the custom forms. Well, I tell you one thing, what happens अगर कोई particular person आपकी वेबसाइट पे आ रहा है and he or she wants to contact you, so these are some things that you can add easily, because these are things which will help you
to maintain a professional relation, and as well they can contact you directly via your website. This is the entire section of get in touch, which is again imported in just one click because it was available in the hosting your website builder. Right? You can customize it according to your preferences. Here is the editing settings, general, field, buttons, whatever you think it's good for you, you can edit it as per your requirement. View submission, form submission. You can also see the submissions, like how many people have submitted it and what are their responses as per these fields. You can change the field. Like as I can see, there is number option is missing, so you can write यू कैन राइट फ़ोन नंबर. थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, शायद आपने नोटिस किया होगा, मैंने भी नोटिस किया था, बट कोई बात नहीं. या सो वी कैन राइट फ़ोन नंबर एंड प्लेस होल्डर में हम डाल सकते हैं +91 बिकॉज इट विल हेल्प पीपल टू राइट द नंबर. ओके, Indian number. Then we have the other options like MCQs. MCQs are like literally like useful option. Like example, if you're like selling a kind of a real estate property, you can ask people कि आपको पता है कि आप किस चीज़ पर आ रखे हैं. मतलब समटाइम्स इट हैपन्स लाइक पीपल डू क्लिक ऑन एड्स, और उन एड्स पे आने के बाद they are like unaware that what they are feeling. Maybe like they are busy, or maybe they're confused, or maybe like they're a little bit not getting what exactly we are trying to sell off, right? But यहाँ पर हम MCQ के तौर पे कुछ भी डाल सकते हैं, like how you get to know about me. Social media, by friend, कि आप मेरे बारे में कैसे पता लगा. You can add options like by a friend, you watched my video. If this field is required, you have to turn this on, and that's it. Nothing else is required. And if I talk about this button, submit, or like if you are selling some sort of a thing, you can write enroll now. Whatever the call to action is like suitable to your business. ठीक है, या get in touch, or like you can write some sort of a call to action like request a call back. Okay, request a call back or submit. Okay, whatever thing is required as per your industry thing, you can write it. And you can also change the position of the button via this place. Button position, submit, center, right side, बीच में आ गया. And then when a visitor fills the form, this is something very great stuff because you can use these things in your ads वाला thing, because कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा समझने में कि आप अपने विजिटर को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं आफ्टर फिलिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म. ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे भी दिखा देते हैं, बट जो लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग का इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स, विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स, दिस विल हेल्प देम, और इवन दिस विल हेल्प दी टैग मैनेजर, और दिस विल हेल्प द पिक्सल टू अंडरस्टैंड कि आपके पास लीड कैसे आएगी, व्हाट इज़ द जर्नी ऑफ अ लीड, एंड जब वो आएगी तो आपके पास ट्रैक कैसे होगा उसका. So these are something different things that we'll be discussing about all those things in some other video. But here it is something आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं कि कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपको थैंक यू विश में लेके जाता है, राइट. सो उसका एक रीज़न होता है कि वो आपको ट्रैक कर रहे होते हैं, राइट. सो दिस इज समथिंग यू कैन टेक देम टू द थैंक यू पेज, और यू कैन टेक देम टू दी अनदर पेज. अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास, जैसे कि मैं आपके लिए जल्दी से एक थैंक यू पेज बना देता हूँ, राइट. So let me just create a thank you page for you. Okay,
Here is the thank you page. Let's save it. Back to the home page. Here is the things that we have done already. Edit form, button. Yeah. So link to page. Thank you. So whenever a person will fill the entire form, it will redirect it to the thank you page. Okay, nice. So that's all. If you want to change the style, you can change the style. That is your taste and preferences. My taste and preferences is like to help you out to understand how this thing work. So I'm doing my job. Okay, you can do your job later on. Let's add the another section. Okay, so add a blank. Now we will be adding a blank section. जिस तरीके से हमने पहले home section को blank बनाया था, अब भी हम blank डालेंगे. And now we'll be using some elements available over here. एक ही बार में सारे elements समझाता हूँ so that आप एक तरीके से उन elements को use करके कुछ अच्छा create कर सकें, right? So if you see, you have a gallery option. You can simply make it a small, just like a drag and drop. Okay, then you can add this button. Okay, okay, then we have this video option. You can add this video. Okay, you can add the subscribe option. This is the mailing option, which is like available. Okay, then you can add shapes. You can use any kind of a shape you want. You can add the contact form. जिस contact form पे भी हम थोड़ी देर पहले काम करके आए हैं. ठीक है, तो these are all the elements available which you can drag and drop easily. You can add the social links as well, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे सोशल लिंक्स डालने के. आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी सोशल लिंक डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू ऐड व्हाट्सएप, ठीक है, सो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर डाल सकते हैं, व्हाट्सएप मी /+91 एंड योर नंबर. ठीक है, अभी मैं नंबर नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज मे बी आई गेट सम कॉल्स आफ्टर दैट. सो अभी नहीं डाल रहा मैं, बट हाँ मैं एक बार हेल्प का नंबर डाल देता हूँ सो दैट इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप. ओके, सो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये डाल दिया एंड वी कैन जस्ट लिटिल बिट make some tweaks. We can just change the layout. We can make them vertically. We can make spacious. We can make the size of the icon bigger if we wish to. We have already added the link, right? So ladies and gentlemen, these are all the things that you can create from this particular thing. And that's it. And one more section we will create. We were talking about the e-commerce stuff, right? So let's talk about, we want to क्रिएट अ प्रोडक्ट पेज. वो मैं चलो एक अलग सेक्शन बना के रखूँ, बट प्रोडक्ट लिस्ट बनानी है तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं अभी के लिए. दीज आर ऑल प्री बिल्ट और लाइक प्री गिवन, like pre-uploaded products. These are not mine products. I have just created in front of you, so don't worry about it at all, please. Right, so this is the thing that we have right now, and this is how we can create. And now let's create the product page. Let's save this. Okay, and though the autosave is on, so don't worry about that. Okay, so we have some lists to store. Manage product. We can also manage the products by going into our store manager of our website. Okay, we have to set it up also. Let me just write a beautiful name for my store, which is Manor of Stores, right? You can also keep as per your mood and as per your things. It's already selected India. Currency is INR, as you know. Continue. So guys, ladies and gentlemen, this is our
the back end of our product managing thing. This look nice, I think so. No worries, we have to set up the entire thing and we will be watching this all those things in the next video.